step 1, iterative waterfall model is step 2, prototyping model is step 3, and evolutionary model is step 4. Then spiral model, rat model, many more are there. But see, I have thought that waterfall model and iterative waterfall model is clear to you. So that's why I planned that today I will be explaining prototyping model. Now, Pratik or some other student is saying that iterative waterfall model is not clear. Or suppose that this is the third step. Or suppose in the next class I have started evolutionary model. And whenever I was whenever I suppose I have started evolutionary model and I was teaching that portion, and at that moment a student said that ma'am, waterfall model is not clear. Then what will happen? I can go back to that first stage because there is a scope of rework. But in case of what happens, there was no scope of rework, because again what in waterfall model what happens, I have to go in the first step, that is I have to again start waterfall model, and then again I have to go iterative waterfall model, then again prototyping model, and at last I have to do the evolutionary model. So what will happen, I have taken 2 weeks to 1 week to complete this two waterfall model and iterative waterfall model concept. So again I will take 2 weeks, 1 week to complete this whole thing. So what is happening, basically time wastage is happening. So that's why this was a very big disadvantage in case of waterfall model. But we have given a scope. Iterative means there are iterations, and you have seen iterations in looping in C programming. You have seen that iterative statements are there. And why do we use iterative statements? Because whenever we want to do a particular program or we want to follow a particular procedure n number of times, we use iterative statements. That is looping we use, for loop, while loop, do while loop, we have seen. So that's why iterative means we want to do one operation multiple times. So see, that's why in iterative waterfall model, what happened, we have given one we have linked all the and again then I can come back to that particular phase which I was present in the previous stage. Okay, so this is the concept of iterative waterfall model. Is it clear now, Pratik? Is it clear? Yes, ma'am. Any more doubt? Anyone? Any more doubt, students? Anyone having any doubt? So should I start prototyping model? So see here. So what is prototyping model? So basically the prototyping model requires that before carrying out the development of the actual software, a working prototype of the system should be built. That means whenever prototyping model is actually adopted is in daily life, because whenever we do something like in real life also, whenever you attend any, you want to register for any classes, like you want to register for any like NPTEL classes, you want to register for any Coursera classes, what you do is you take a demo. Suppose you want to learn Python, okay, so what you do is before joining to that courses, you know that you are going to pay in that courses, and that payment, whenever money comes in your mind, you think not only once, more than more than once, that is multiple times, you think that whenever I am spending money for a particular thing, I have to be cautious. So that's why whenever you actually give you take any tutorial or anything, any courses, what you do is first you do some survey. What kind of survey you do? Basically, you check in internet or in YouTube or in Google, whatever be it,
you check that what is Python, what are the importance of Python, what can we, if we learn Python, what can we do, and some basic structures of Python you just know. That is what you are checking a prototype, or you are checking okay of that particular thing, of that particular course, so that you, whether that thing is feasible or whether that thing is possible for you to understand, you first check. That is, you are checking whether that subject or you are compatible or comfortable with that subject or not. Okay, so this is a real life scenario. Now if you consider it in case of software engineering, prototyping model, in prototyping model basically what any company does, that because as we know that whenever client demands any kind of software, the client is not sure about it, because when, every time he changes his decision. So that's why what we do, we used to take a note of it, we used to document it, but whatever we necessary measures we add up, actually that is not always possible, that is also not always 100% true, because it may happen that after development of software, again the client is disagreeing what he said, or again it may happen that the whatever we promised, or whatever the company has promised the client, that is also not met of the client. So that's why what basically in prototyping model we do, we generally used to make a prototype. Okay, so have you seen the movie Jurassic World, students? Have you seen the movie Jurassic World? Anyone? Students, please respond. Yes, madam. Some parts I have seen. Jurassic World. Yes. So see here in that Jurassic World, you have seen that they have made Jurassic World means that one which was built made in 2000 there. I think the actor name was Chris Pratt. आवाज कट रहा है मैम आपका। So, you are not properly audible. Just a second. Let me check my. Okay, so that. Yes, yes. Please say. मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है। So that in that movie you have seen that they are making a highly intelligent dinosaur. Okay, so in that case they have built a prototype, that is I think that prototype name was maybe Indominus Rex. That was the name of that prototype. So they have built a prototype, and they were checking that that मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। is clients are basically the company. Hello. Hello, students. मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है, पता नहीं क्यों। और हम तो कॉल से बाहर भी हो गए थे अपने आप। सबको ही हो गया था। मैं पूरा अभी सुनाई दे रहा है तुम लोग को? देखो लैब में हूँ, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इधर में कोई आवाज भी नहीं है, पूरा शांत एनवायरनमेंट है, इसीलिए मैं लैब में आके बैठी, कोई टीचर का साउंड भी नहीं है, फैन का साउंड भी नहीं है। अभी अगर तुम लोग को नहीं सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। ओके,
नो मैम, आपका नहीं आवाज मैम, कट नेटवर्क का कट के आ प्रॉब्लम है। रहा है मैम, नेटवर्क इशू है। अभी सही आ रहा है मैम, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा। बीच में वो होल्ड हो गया था, तो बीच में तो प्रॉब्लम हो नो रहा मैम, था बीच कि नहीं बीच नहीं में नहीं, पूरा कट आ रहा था मैम, मतलब आवाज पूरी तरह नेटवर्क से की। नहीं आ रही थी। अभी आ रहा है तो। अभी यस। क्लियर। यस मैम। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में, तो मतलब वो मूवी के हिसाब से सोचो आप लोग कि देखो वो जो मूवी था, वो जो जुरासिक वर्ल्ड, उसमें एक डायनासोर को वो लोग, इंडोमिनस रेक्स नाम का एक डायनासोर को वो लोग बनाए थे। और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड डायनासोर था, मतलब वो जो डायनासोर था उसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत डायनासोर जैसा थे, बहुत सारे एनिमल्स का मिला के वो लोग एक डायनासोर को, जैसे वो कलर चेंज कर सकता था। आप लोग देखे हो क्रोमेटोफोर्स जो होता है, जो लोग कलर चेंज कर सकते हैं, वो गिरगिट एक्चुअली कलर चेंज करता है। तो गिरगिट का डीएनए से कुछ स्ट्रैंड्स लेके, ओके, फिर वो जो फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग टोड, वो उसका भी थोड़ा बहुत ये डीएनए का स्ट्रक्चर लेके बहुत सारे मिला जुला के वो लोग एक मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड डायनासोर बनाए। और वो एक्चुअली क्या था, वो एक प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप मतलब वो लोग उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो लोग को क्या चाहिए था कि एक ऐसा कुछ बनाए ताकि वो जो पार्क वो लोग बनाए हैं उसका अट्रैक्शन कभी कम ना हो, क्योंकि सब लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो वो लोग के पास अगर लिमिटेड डायनासोर्स रहेंगे तो आज से कुछ साल बाद ऐसा हो सकता है कि लोग को पता चल गया क्या इसमें है और नहीं आने वाले हैं लोग। तो इसीलिए कुछ हर साल वो लोग कुछ नए नए करते रहते थे ताकि मतलब लोगों का इंटरेस्ट बना रहे उस पार्ट में। तो क्या हुआ, वो लोग वो जो प्रोटोटाइप बनाए, जो डायनासोर वो लोग बनाए, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम वो लोग बनाए थे। और वो लोग को भी नहीं पता था कि वो डायनासोर में क्या क्या फंक्शंस हो सकता है और उसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम डिजाइन किए हैं वो डायनासोर को, और वो डिजाइन किया हुआ डायनासोर था। तो ये वो लोग ये सोच के बनाए थे कि वो प्रोटोटाइप अगर अच्छे से बन गया और वो अगर अच्छे से रन कर गया, मतलब अच्छे से काम कर गया, तो वो लोग उस जैसे डायनासोर बहुत सारे बनाएंगे और उससे भी डेवलप डायनासोर्स बनाएंगे। बट मूवी में तो कुछ और दिखा देता है कि वो डायनासोर हाथ से निकल जाता है, फिर बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ किसी को मार देता है डायनासोर। तो इसीलिए वो क्या प्रॉब्लम, वो लोग को नहीं पता होता है कि उसका कितना डिसएडवांटेजेस हो सकता है। तो यही मेरा मतलब यही था कि एक्चुअली प्रोटोटाइपिंग मॉडल मैम पूरा ये बात हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ गया। लोग के यहाँ पे कंपनी। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस मैम। बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। एनीवेज, बारिश में शायद ऐसा हो रहा है। तो वो एक्चुअली तो दैट्स व्हाई एक्चुअली वी के आर बाद यूजिंग पता नहीं। प्रोटोटाइप। नहीं, अभी मैं शुरू कर रही हूँ, तो एक्चुअली के बाद कुछ बोली भी नहीं हूँ। So that's what I'm saying, that whenever any company comes to our any client comes to our company, whatever the client says, in prototyping model we actually make a demo of that requirement of that client. Okay, that is the demo of that software, and we used to present that software to our client. Okay, so that the client understands by the demo that whatever that is present in the demo is actually matching with the requirement. And if anything and if the client wants to add anything or wants to delete anything, that client can do that, and on that demo, because building a demo is quite cheaper than building an original software. So जब आप लोग वो वाला मूवी में देखो कि वो लोग बोल रहे थे कि ये डायनासोर बनाने में हम लोग को बहुत खर्चा हो गया, बहुत सारे पैसा इस डायनासोर को बनाने में लगा। तो देखिएगा वो मूवी में वो लोग डायनासोर को मार नहीं रहे थे, लास्ट में जब सब कुछ अनकंट्रोल हो गया तब वो लोग जाके मारे डायनासोर को। बट पहले वो लोग का क्या मोटिव था कि डायनासोर को हम लोग पकड़ेंगे, मारेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत पैसा खर्चा हो गया। तो सिमिलरली हम लोग अगर देखेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग अगर
डेवलप करेंगे तो उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डेमो या तो प्रोटोटाइप बनाएंगे और उसको क्लाइंट को दिखाएंगे, ताकि क्लाइंट को पता चले कि हाँ ये मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा, ऐसा काम होगा इसमें। अगर कुछ ज्यादा फंक्शनलिटीज ऐड हो गया तो वो डिलीट कर देगा। अगर मतलब जनरली वैसा होता नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ। और अगर कुछ ऐड करना हुआ, जनरली क्लाइंट्स लोग ये ऐड करो वो ऐड करो, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करते रहते हैं। बट वो देखेगा क्लाइंट की हाँ चलो ये मेरा इसमें सॉफ्टवेयर में इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करना है, तो वो भी वो बता देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लार्ज कंपनीज होते हैं वो लोग को थोड़ा पैसा का मतलब ये सब स्ट्रेटेजीज वो लोग यूज करके पैसा मतलब कॉस्ट एफिशिएंट बनाते हैं। So that is the main concept. Why do we use the prototyping model? Okay. So see here in prototyping model, see a prototype is like a toy. Okay, toy implementation of the system. Okay. So basically it is usually built using several shortcuts, and the shortcuts might involve using inefficient, inaccurate, or dummy functions. Okay. So see here, the shortcut implementation of a function, for example, may produce the desired results by Not visible. Hello. Ma'am, screen is not visible. Oh my God. Just a second. Is it visible now? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we are actually using some shortcut tricks. Okay. So the shortcut implementation of a function, for example, may produce the desired results by using a table lookup rather than performing the actual computations. So a prototype usually turns out to be very crude version of the actual system, possibly exhibiting limited functional capabilities, low reliability, inefficient performance as compared to the actual software. Okay, so this is just a prototype, so it should not have that much functionality or that much reliability as the original software will have. So that's why it is just a toy implementation. So आप लोग तो जब बच्चे थे तब आप लोग तो बहुत मतलब खिलौना आप लोग के पास रहता था, आप लोग खेलते थे, गाड़ी गाड़ी खेलते थे के लोग, और लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या खेलती होंगी, मतलब घर बना लेती होंगी, फिर पता नहीं किचन वगैरह बना बना खेलती होगी। आप लोग करते थे या नहीं, बट हम लोग थे, वो एक डेमो था कि हाँ हम लोग जब बड़े हो जाएंगे हम लोग को गाड़ी चलाना होगा, वो गाड़ी ऐसा दिखेगा। और फिर लड़की लोग खाना वाना बनाती थी जब छोटी थी, तो मम्मी को देख के ही वो लोग ऐसे इंस्पायर होकर बनाती थी कि हाँ मेरी मम्मी ऐसे करती है, मैं भी ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसे पापा को डांटूंगी, ऐसे ये मेरे मैडम बोल नहीं रहे हैं या फिर आपका आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो। थोड़ा भी आवाज नहीं आ रहा है। फिर वो क्या था, प्रोटोटाइप था कि हाँ हम तुम बहुत गंदा नेटवर्क है, नहीं आ रहा आपका आवाज। No, ma'am. माय गॉड अभी सुनाई दे रहा है? अरे तुम बीच लोग बीच में बदमाशी तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं मैम, क्लास ऐसा बंक नहीं करने करते हम की लोग, इतने गंदे नहीं। नहीं मैम, अभी आवाज आ रहा है।
अभी कैसे आ गया? इतना देर तक सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक क्वेश्चन कर दी मैं और तुम लोग को सुनाई दे अभी से। मैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अच्छा सुनो सुनो, ठीक है, ओके। इतने स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो देखो, अभी मैं लैब में बैठी हूँ, अभी भी अगर लैपटॉप मतलब अब तुम लोग को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं और इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ बोलो। मैं मतलब कॉलेज में हूँ, लैब में जाके तुम लोग को साउंड प्रॉब्लम ना हो इसीलिए जाके लैब में नेटवर्क बैठी हूँ। तो प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम के कारण हो नेटवर्क रहा प्रॉब्लम। देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इतना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो। अब इतना ज्यादा बारिश हो रहा है यहाँ पे और मतलब सीरियसली आई हैव नथिंग टू से। तो ठीक है, हम लोग एक काम करते, प्रोटोटाइपिंग मॉडल अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो रहा है क्या ये क्लास को लेके, या तो कुछ और मतलब ये साउंड और नेटवर्क प्रॉब्लम छोड़ के और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या आप लोग को? यस मैम, थोड़ा स्पीड स्लो रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। स्पीड स्लो कर दूं? ओके। अरे मैं तो बहुत स्लोली पढ़ाती हूँ, इससे भी ज्यादा स्लो? ठीक है। नहीं और मैम, जब कोई किसी पढ़ाने को लगते प्रॉब्लम, तो मैं और कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग बोलो मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है ये शुरुआत है। तो मुझे तो नहीं पता कि आप लोग के क्लास में, मैं फर्स्ट टाइम आप लोग का क्लास ले रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो। मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ या हिंदी में पढ़ाऊँ, मतलब आप लोग मुझे सजेशंस दो, उस हिसाब से मैं अपना मतलब बनाऊंगी। नहीं तो आप लोग, मुझे लगेगा कि हाँ, एक तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोग सच में कुछ मतलब क्लासेस सुन रहे हो या आप लोग में आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता है ये सब। बस मैं पूछ लेती हूँ बीच बीच में, स्टूडेंट्स आर यू देयर, तो आप लोग हाँ बोल देते हो। तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, दैट इज नॉट अ गुड वे। ओके, तो अच्छे से आप लोग अगर सीखना चाहते हो ये सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग के सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही टफ है और आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है वो सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आप लोग को ऑल टाइम काम लगेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बहुत काम का सब्जेक्ट है जब आप लोग आईटी इंडस्ट्री में जाओगे। और ये सारा चीजें जो मैं अभी बोल रही हूँ आप लोग देखोगे कि वहां पे जाके आप लोग को याद आ रहा है, हाँ मैम ऐसे बोली थी, हाँ तब तो नहीं सुने थे, तब नेटवर्क इशू बोल बोल के हम लोग मैम को परेशान किए थे, बट अभी समझ में आ रहा है कि हाँ यही सब रियल लाइफ है, यही सब होता है। तो एक्चुअली मैं इसीलिए तुम लोग को मतलब बोल रही हूँ ये सब कि मतलब थोड़ा आप सीरियस होके ये पढ़ाई करो, क्योंकि नेक्स्ट सेम में हम लोग को नहीं पता है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। ये जो कमिंग पूजा के बाद सुनाई दे रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस होगा। अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया तो आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम भी होगा, तो इसीलिए एटलीस्ट कुछ लिख लिख पाओ और मतलब सब लोग अच्छे से पास कर जाओ, मुझे बस यही चाहिए। तो इसीलिए आप लोग अगर डे 1 से अच्छे से मेरा क्लासेस सुनोगे तो आप लोग को उतना एफर्ट इस सब्जेक्ट में नहीं देना होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम saying if you are having any issue or any kind of problem, please communicate with me. If you are facing any problem in telling in this open forum, you can communicate with me in WhatsApp. I have my given my WhatsApp number, I am added in the group. So if you are having personal any issues, you can contact with me. I will try to solve, or any other issue you can tell it in this class also, then also I can sort it out. But at least communicate with me, then only I will be able to understand whether you are interested in this class or not, or you are actually studying this present in this class or not, studying properly or not, because it matters for me. Because now I am taking your classes, I want that my students should get good marks in my subject, as well as they should also like this subject. So that is my only requirement for all, from all of you. So actually you are my client and I am developing you. So that's why in, hello, am I audible? और मैं बस खुद ही बके जा रही हूँ? नहीं अभी तो सुनाई दे रहा है मैम अच्छे से। हाँ, तो अच्छे से तुम लोग रिस्पॉन्स करना।
ये सारा इतना सुबह सुबह इतना बड़ा लेक्चर देने का मतलब भी यही है कि आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनो, मेरा क्लास अटेंड करो। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है पढ़ाई लेके, अगर आप लोग को सामने ये ओपन फोरम में बोलने में बहुत सारे लोग थोड़ा शाई टाइप के, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। मुझे नहीं पता, आप लोग के साथ मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो लड़का थोड़ा शाई है, वो लड़का थोड़ा मुंहफट है, मुझे नहीं पता है ना। तो आप लोग अगर आके मुझे बोलोगे पर्सनली, तब जाके मुझे पता चले, तो तब मुझे आइडिया होगा, हाँ ठीक है ये लड़का ऐसा है, फर्स्ट टाइम मैं क्लास ली हूँ, मुझे आइडिया हो गया है। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं जब फिर से आप लोग का क्लास लूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये तो ऐसा ही है, इसका थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम ऐसा होता है, तो मैं इसके लिए मैं ऐसे कर देती हूँ। और अगर नहीं बोलोगे तब मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एवरीवन शुड, not only few students. See here in your class there are almost 62 or 63 students, but only few students attends the class, and only from those few students only few students responds in the class. So that's why I want all of your response, and all of you, if you are having any issue, you can communicate with me in WhatsApp. Okay students, so we are Okay, having ma'am. our next class at 5 p.m. So we will again meet and we will check whether this network issue is persisting or not. I hope it will be resolved and we will continue the prototyping model. Okay, students? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Classical waterfall model was used earlier, but as of now, it is not, it has become obsolete. So if you are considering this present case scenario, we will say that it is a theoretical model, but as earlier it was a practical model. Okay, because it was the base of waterfall, base of software development lifecycle model. We have implemented that model. That's why we have seen that there are certain disadvantages which we should remove from the, which we should remove, and we should go for the upgraded or updated version of the lifecycle model. And the updated version of that lifecycle model is iterative waterfall model. Okay, Pratik? Pratik, okay or not? Okay, fine. Anyone having any question? Any more question? So should I stop? So should I end the session? So students, we will again meet in our next session, that is from 1 to 2, and tell other students also to join. So everyone should join the class. Only 34 students have joined. So okay students, thank you for attending today's class. Now you can